let's. There are some people who put up their hands. Shabnam, can you just, if people would like to start asking questions, we can. Just before they do, may I quickly add to what George is saying and Shabnam? I am here not to say what I want to say, because I get enough opportunity to do that. I want to be able to speak about what people want to hear about. Right. So for me, it's very important to be interactive. अगर किसी को कुछ बोलना है, पूछने की जरूरत नहीं है. अगर कुछ बोलना ही है, कोई कमेंट देना है, कोई ओपिनियन देना है या कोई सवाल करना है, आज जरूर पूछिए, क्योंकि मौका है. और खेल के बारे में हो या जिंदगी के किसी भी पहलू के बारे में हो, मतलब हम बातचीत तो कर रहे हैं एक दूसरे से, और जो मैं बोलूंगा वो मेरा ओपिनियन ही तो होगा, कोई ऊपर से भगवान का तो नहीं होगा. मेरा ही ओपिनियन है तो वह सुन ही लीजिए, और मैं आपका ओपिनियन भी सुन लूंगा. तो as interactive as possible. We'll go with Anshul. यार अब भी शबनम, अब भी बहुत लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया. मुझे लग रहा है कि मैं ब्लैक स्क्रीन देख रहा हूँ. चक्कर क्या है? हेलो सर. हाँ बोलो. सुनील. हाय मैम. हाय सर. मेरा नाम सुनील. हाँ जी, दिख रहा है. कमिटमेंट वाली एक मिनट भाई यार. राइट्स के लिए, बाल अधिकार के लिए आप NICP के थ्रू, नेशनल इंक्लूसिव चिल्ड्रंस पार्क. I'll just put Javed. यार एक करके. सुनील नामदेव, आप अपना अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए, बाकी सब थोड़ा सा म्यूट कर लें यार, मौका सबको मिलेगा. हेलो. हाँ जी सुनील. हाय सर. मेरा नाम सुनील नामदेव है और मैं MP से हूँ. और आज काफी अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके. और सबसे पहले तो मैं आईबे को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपसे इंटरेक्ट करने का इतना अच्छा मौका दिया हम सभी के समक्ष. धन्यवाद यार, हम सब दोस्त ही हैं यार, सब एक ही हैं ना. और सर आपको काफी सुना है मैंने, और काफी अच्छा लगता है जब आपकी वॉइस में कमेंट्री सुनते हैं. और मुझको भी सर काफी अच्छा लगता है एक क्रिकेट कमेंटेटर्स को सुनते हुए, और मैं आपका काफी बड़ा फैन हूँ. थैंक यू सुनील. मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अगर सर कोई ब्लाइंड क्रिकेट कमेंट्री के फील्ड में जाना चाहे तो सर उसको क्या करना पड़ेगा? ये तो तुमने यार बड़ा असमंजस में डाल दिया मुझे यार सुनील, क्योंकि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमको थोड़ा दिख कम रहा है और दूसरा हम कह रहे हैं कि हमको बोलना है उसके बारे में. तो ये तो थोड़ा सा उल्टा हो गया यार, है ना सुनील? अब आप ही हमको सजेशन दो कि अगर कोई मतलब जो पूरी तरह से देख सकता है वो कमेंट्री करे तो उसके लिए भी मुश्किल ही है, लेकिन अगर हमको खास दिखता नहीं तो हम कैसे कमेंट्री करेंगे? ये तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा यार. या तो हम ऐसा कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है. जैसे मेरे मन में ये आया जहन में कि जैसे मैं और सुनील आप कमेंट्री कर रहे हैं, अगर मुझे दिखता है पूरा तो मैं क्या है कि एक तरह की कमेंट्री करूं और आप उसमें जोड़ें अपना, जैसे कि कोई और प्लेयर्स हैं उनके बारे में आप जानते होंगे कि किस तरह का प्लेयर है, कहाँ से आया, क्या किया उसने, कितनी मेहनत की. तो ये आपके थ्रू ऐसी चीजें जुड़ सकती हैं जो एक कहानी सी बनाती है बहुत बढ़िया कमेंट्री के लिए. क्योंकि आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई इसने ये किया, उसने वो किया, 1 रन ले लिए, 2 रन ले लिए, थ्रो आया, ये वो तो सब दूसरा आदमी कर लेगा. अगर आप ये जो खेल रहे हैं उनका कुछ कहानी सुनाएं या उनके बारे में कि क्या मुश्किल से गुजरे या कहाँ से आया वो, या उसका स्पेशलिटी क्या है कि यार बड़े लंबे चक्के मारता है या कुछ करता है, ये करता है या वो करता है. तो इस तरह से कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि जरूर ब्लाइंड क्रिकेट में एक पैदा करना चाहिए हमको एज अ स्पेशल इंक्लूसिव कमेंट्री. तो उसमें मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं है यार. सिर्फ जो ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स वो ऐसे लोगों का एक मिश्रण दे कमेंट्री में, है ना? Yeah, I would like to just add here, which is that just say you had said in the beginning that knowledge and language is important. Yes. And I think this is precisely what is needed. हमें खेल के बारे में जानकारी होना जरूरी है और हमें बोलने के लिए अपना भाषा needs to be good, whether it's Hindi or English or the language that the commentary is on. And you can definitely be a second person in the commentary box, adding value to what the sighted person is saying. Yes. And we have an example of Dean Duplessis, the Zimbabwe commentator who's totally blind, but he has been doing commentary on television as well as radio. So it's possible, but you have to do work on your own to start. हाँ भाई, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी. और जैसे कि डीन डुप्लेसी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, आप किसी भी भाषा में आप कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन हर एक भाषा एक महासागर होती है. तो नामदेव जी, इस महासागर में आप
खूब पीजिए, खूब सीखिए अपनी भाषा, और आगे जाके जब ऐसे इवेंट्स होंगे ब्लाइंड क्रिकेट या कहीं भी, और अगर आपकी भाषा ऐसी है कि आपने उसको बहुत सजाया, बहुत संवारा, बहुत बढ़िया तरह से आपने सीखा, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके एक रेपुटेशन होगी कि यार कोई भी इवेंट हो, चाहे ब्लाइंड क्रिकेट का हो या ना हो, अगर नामदेव को बुलाया जाए तो कुछ अच्छा सा सुनने को मिलेगा। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, भाषा में खास तौर से, है ना। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो खेलते हैं, और जितना खेलते हैं उतनी क्रिकेट की नॉलेज हो जाएगी, लेकिन जितना आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अच्छी तरह से बोल पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसी से जो लिसनर है ना, सुनने वाला श्रोता, उसी से वो इम्प्रेस होगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, इसको सुनने में बहुत मजा आता है। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने शुरू किया था अपना कमेंट्री 1982 में, और उसके बाद में दिल्ली में पोस्टेड था, तो काफी कमेंट्री मुझे दूरदर्शन कराते थे, बड़े अलग अलग स्पोर्ट के। और मैं उस वक्त बीएसटी में था एज असिस्टेंट मैनेजर या असिस्टेंट सर्कल मैनेजर ऑफ नॉर्थ। तो काफी ट्रैवलिंग थी, महीने में करीब 25 दिन। एक गाड़ी थी, ड्राइवर था, क्योंकि वो कंपनी देती है, और खूब दूर दूर जाके मार्केट्स देखना, ये वो जो मेरा काम था। मैं बैक सीट पे बैठे बैठे अपना जो कमेंट्री का जो स्टाइल है, या अपने जो शब्द जिस तरह से जबान से उतरते हैं, निकलते हैं, वो मैं धीरे धीरे चुपचाप से प्रैक्टिस करता था बैक सीट पे, क्योंकि लंबी लंबी ड्राइव्स थी। तो मेरा ड्राइवर जो था मॉरिस बेचारा, वो हमेशा ड्राइव करते करते रियर व्यू मिरर में देखता था, जैसे कि कुछ मतलब मैं किसी पागल को तो नहीं चला रहा हूँ, ये चक्कर क्या है। और अपने दोस्तों को जाके बाद में, जो बाकी ड्राइवर थे कंपनी का, वो बोलता था कि हमारा साहब कुछ अजीब सा है, पीछे बैठा बैठा बुदबुदाता रहता है, पता नहीं क्या बोलता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करना जब भी मौका मिले जरूरी है, कि भाई देखो, मैं जानकारी तो है, लेकिन क्या वो मेरे मुंह से सही निकल रहा है या नहीं। तो ये चीज मतलब मैंने खुद की है, तो मैं बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। Right. Yeah, who's next, Shabnam? Yeah, can I? Yeah, please. Okay. Charu ji, namaste. It's very good to hear from you. I have two things. One is, of course, पहले आएंगे, अपना नाम बताओ यार पहले। Srinivasu from Okay, Srinivasu. Okay. So दो चीजें हैं, एक तो cricket related, and second thing, totally perhaps the one you may not expect this question, but Srinivasu, I have said anything and everything. exactly, yeah. So first related to cricket is, or commentary in general is, आजकल तो visualization बहुत हो रहा है, जैसा कि as the portals come in or the different private channels come in, so a lot of visualization is actually coming, and commentary कम होते जा रहे हैं मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो. So, and that is actually not so good sign, and people like us, who actually enjoy the commentary, versus even if I view it on my phone or tablet, wherever, I actually do not enjoy as much as I do versus the commentary. So what do you actually think of future? आगे जाके actually क्या होने वाला है? Will actually commentary will actually take the seat again, or will it actually go? Will the scenario become worse in the future? And that is let me ask two questions so that you can actually answer both together if you like. Okay. The second thing, although you said in the beginning that George भाई हम लोग इतनी बुढ़े भी नहीं है, but since we wish George on every his birthday, so we actually know his age. So since he said he studied with you, so we might know yours as well. Yes, yeah. Yes, you do. Yes, So the thing is that, but having said that, it is a question to, in fact, both of you, and it might be helpful to especially this generation. आप लोग इतना ये years, maybe you are very energetic, enthusiastic, and you are, by the way, Charu, you are also handsome still. Your voice has got far more clarity, and I'm sure you must have done a lot of, one is then you may not have access to all the junk food and all, it's a few years ago, that is a different story. But what is the message that you would actually give to this generation, that they can continue to be that healthy when they actually grow? Because this might helpful to the community in general. I know, yeah, Srinivas, that's such an important aspect. I'd like to answer your second first, but I'll go to the first. Sure. First, ये है कि you mentioned a very difficult time, because यार किसी का और कुछ खुला है वो बंद कर दें, है ना? हाँ, so I've muted him. Yeah. Thank you. तो क्या हुआ कि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले
that Srinivasa, that there are two schools of commentary. The English school will always resist over talking. And if you, for instance, if you hear some tennis, as I think Georgie has been listening to, you'll hear the English commentators, and in tennis it's a practice, huh? Everybody be completely quiet. All you'll hear for say 1 minute while the rally is going on is tuck, 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 tuck. And then अरे वो मतलब हो क्या रहा है भाई? तो सुनने वाला देखने वाला देख ले, वो सुनने वाला क्या करे? So, and at the end of the point, oh, magnificent down the line pass on the backhand, very well played, 40 love. अब उसके बीच में क्या हो किसी को मालूम नहीं. तो इस तरह के स्पोर्ट में भी एक अजीब से एक रूल तो नहीं, कुछ मतलब मोरेज, अनरिटन लॉज आ जाते हैं कमेंट्री के लिए कि भाई टेनिस में हम रैली के दौरान बात नहीं करते. अरे मैंने कहा तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो बैठे हो ना कमेंट्री बूथ में, कोई ऐसा थोड़ा है कि कोई लाइव उसको कमेंट्री सुनाई दे रही है कि वो इरिटेट हो रहा है खिलाड़ी. जो बाकी बैठे हैं उनको भी थोड़ा मजा आना चाहिए ना. अगर रैली चल रही तो चल रही है, आप एक तरफ देख लीजिए, और अगर बीच में कोई कुछ कहानी बता रहा है या कोई कह रहा है कि भाई देखो रॉजर फेडरर जब आया था दिल्ली में तो उसने ऐसा, ओ बाय द वे यू नो नाइस बैकहैंड डाउन द लाइन, तो वो जो कहानी चलनी चाहिए बीच में, वो लोग कहेंगे कि यार ये तो फिर आपको प्रोड्यूसर बोलेगा चुप हो जाओ, ये बोलेगा. तो it's a very interesting aspect where the Americans generally speak a lot more, and it is accepted in America. In all their sport, there's a lot of description, there's a lot of talk, और कभी-कभी over talk, दो तीन लोग बात करें एक बार में, सब चलता है. Right. यहाँ we are influenced by the British who say no, everybody quiet, quiet. और कहीं मुश्किल से अगर suppose you and I are talking to Vasu and you say something and I say something over, हा हो गई, तो producer फट से कान में बोलेगा please don't talk over each other. अरे यार मैंने कहा मतलब नेचुरल चीज है ना कि दो लोग बात करें, तो कभी-कभी वो भी हो जाता है इंटरजेक्शन. तो ये सब स्टाइल्स की बात है. आई थिंक यू नो अ पॉपुलर ओपिनियन हैज टू बी एक्सप्रेस्ड. जो भी कुछ चल रहा है उसको चलता ही रहना है, वो जरूरी नहीं है. So if popular opinion in India says we want to hear more, we want it more descriptive, we want to be more involved with every stage of the commentary, then I think the people who produce television or other forms, as you say now, you know, there are many other forms, but remember the camera set is only one. अब मैं यार television की ज़्यादा detail में नहीं जाना चाहता सबके लिए, but Srinivasu, whatever goes around the world in whichever visual format or audio format, generally there's only one team at the ground. So the same thing goes to different countries, and the different commentaries happen on the same feed. So it's a little complicated. I don't know how to influence the producers who produce sport to allow the commentators to say more, to describe more for the benefit of those who are listening avidly. Because obviously, अगर कोई बक रहा है और ज़्यादा मतलब कुछ समझ में नहीं, you know, if it's not relevant or if it's not pleasing, then a lot of people will say, यार बंद करो इसको यार, चुप करो, he's bothering us. So it's a very sort of a fine line, which is difficult. The second point you mentioned, of course, is very interesting about you know, people like George who are like full of energy and he's still high jumping and pole vaulting everywhere. Are you? No, I'm just joking. But hi, yaar, we're all senior citizens for some years now, and the big advantage is, as I just discovered, you can get a discount here and there on some ticketing and all that. I say, then I get a discount, and the guy at the counter says, "ID, please." मैंने कहा, "ID क्या के लिए चाहिए आपको?" He said, "How you are taking senior citizen discount?" और मैंने कहा, "ले ले ID, ले ले यार." ठीक है. So, but anyway, it's a state of mind. You know that, Srinivasa. You know the answer to that even when you ask. It's a state of mind. अब पुराने जमाने में क्या था 30-40 years ago, you know, our fathers and others, और कोई 50, 55, 58 का हो गया near retirement, he started feeling retired कि भाई मेरा तो टाइम खत्म हो गया, मैं तो रिटायर्ड हो गया, भाई मेरे लिए चाय लाओ, मैं तो घर पे बैठ के आराम से थोड़ा सा इवनिंग वॉक पे जाऊंगा, आ जाऊंगा. This whole mindset of not being active, of slowing down because I'm supposed to slow down. You're supposed to do nothing. You're supposed to carry on being as energetic as you can be for as long as you can be. And the more we slow ourselves down in the mind, the more the body slows, and the more the body slows, the mind slows, everything slows down. And now I'm not saying that I have any kind of secret to a long life. I mean, God forbid, I may not live much at all. But till you're alive, damn it, be alive, be fresh, be accepting of everybody. Because आज क्या भी होता था पुराने जमाने में, अब तो खैर कम होता है क्योंकि बच्चे सब कुछ जानते हैं.
पुराना जमाना कहता है कि अच्छा आप तो 60 साल के हो गए, ओहो आपको तो 60 साल वाला सोचता है कि मैं ही सब जानता हूँ और 25 साल वाला तो बच्चा है. वो सब बदल गया अब यार. So I think you also have to kind of be aware that the world is not revolving because of you or your opinion or your age. I mean, be accepting of everything new, be accepting of change, be accepting of youth, be accepting of energy, and expend as much as you can because our energy reserves are limitless. यार. हम कितना भी कर लें, रात में सो लें, अगले दिन फिर चालू. So this we must not force ourselves to slow down. Oh, a lot of people say, "Oh, act your age. Oh, be your age." मैंने कहा age में क्या है भाई? क्या मैं जाके rocking chair में बैठ जाऊँ? क्या करूँ मैं? So I think it's much more in the mind, and yes, fitness has a lot to do with it. So Audio now unmuted alert. from NVDA properties dial. from a very early age, because I was always involved with the world of sport. Even today, like I said, I was, am, and will always remain a sportsman. Now, sport खेलने के लिए तो फिर fitness तो चाहिए ना. So a lot of focus on health is necessary. Health means fitness. Health means food in terms of diet. Health means a little bit of discipline. ये नहीं कि मैं इतना खा लूं, उतना खा लूं, ये खा लूं, खराब खा लूं, पिज्जा खा लूं, आइसक्रीम खा लूं. अरे थोड़ा थोड़ा खा लिया बहुत है यार. So there's a little bit of sacrifice involved, yes, but that sacrifice is for a very good reason. If you're healthy and fit and energetic, why ruin that by having a Do you little more still ice play any cream? sport regularly? I play everything very regularly. Not right now, I must admit, because I hurt my shoulder. यार मैं कहीं गिर गया था. खैर वाला कहानी है. I slipped. I was up in Kathmandu doing the Everest Premier League, the Nepal IPL. और कहीं इधर उधर हम गए थे रात में, वहां मिट्टी उट्टी गिरी हुई थी, ये वो मैं थोड़ा सा गिर गया, shoulder hurt हो गया मेरा. So right now, listen to this, Srinivas. Right now, my right shoulder is pretty badly torn. I'm going for a lot of physio. 3 months are up, and it's still going to take another month or two. But in the meantime, what have I started doing? I've started playing tennis left-handed. Oh. I said, यार मैं घर पे थोड़ी ना बैठूंगा या physio के पास गए ये वो. I started playing tennis left-handed. So if I was 6.5 on 10 in tennis with my right hand, because I play every day, when I started playing with my left hand, I was like down to 0 on 10. अरे कोई मेरे साथ खेले नहीं, क्योंकि खेलना है बड़ा मुश्किल यार. Now within 3-4 weeks, I've gotten up to at least 3 on 10. And not my old friends are still not playing with me because I'm still not, that standard. But a lot of other people are saying, "हाँ चारो आओ यार खेलेंगे." तो भाई ये तो फिर अंदर से आना चाहिए ना आवाज. All right, Srinivas. Thanks, yeah. Good to speak to you. Thanks. I'll just ask Anshul to ask his question and then we can give others chance. He's been waiting for a long time. Anshul, please आप अपना सवाल पूछिए. Anshul, please unmute yourself. Anshul, अपनी शक्ल दिखाओ ना यार और कुछ बोलो. Okay, sir. There you go. Mr. Kapoor. हाँ जी. Now can you see me, sir? यार Light off है शायद घर में. कुछ गड़बड़ है. कोई बात नहीं यार. कम से कम I can hear you. चलो, we'll take that. Good evening to both of you, sir. Thank you, Anshul. My question was somewhat similar to what Shivnasu has just asked. That many a times we see IPL and they don't even speak what is the score, how many wickets are down, and what are the balls remaining, how many overs, what are the runs that needs to be scored in those balls. So we feel very irritated on that front, that anybody who can see on the screen. I'm surprised you say that because, even in cricket, now obviously we talk about cricket, not other sports, but let's just take cricket. There's a very clear division between test match cricket, where they speak very little, because very little is going on, which hota hi nahi. Oh, kab tak bolega well left. Then there's one-day cricket where there's more talk. And there's T20 cricket like the IPL, where there's a lot more talk than test matches or ODIs because there's so much going on all the time. Now, I'm surprised you think that there's not enough because I think scores and people and names and figures and facts are mentioned all the time because there's so much going on all the time. And in fact, a lot of people are irritated, those old-fashioned traditional people, saying, "Yaar, bolna band karo, humko dikh raha hai na." But T20, they're now specialty commentators who are T20 specialists because they enjoy speaking a lot more. They have more descriptive power and they have more energy and they sort of are better for viewers because they're sucky away and they're saying, "Oh, this is going on, 4 balls left." Oh, test match mein to nahi bolega na. 8 runs now, where the mid wicket's moving off little square or ye wo kar kar ke matlab khub baat hoti hai T20 mein. I'm surprised that you feel ki kam hoti hai,
लेकिन यार उससे ज्यादा अब शायद मुश्किल हो जाएगा. No, Sir, I think you are right, because when we go in the metro, we feel that the announcement is adequate, but the people around feel that they are speaking much more than what is required. You see what So I mean? that is, there is a very thin line, fine line, like you said earlier, Yeah. between what needs to be spoken and what not. so. I just want to add. Can you hear me? Yes. Yes, Yes, George. sir. I just George, want to listen. add. I just want to tell you, everybody can hear you all the time. Okay. Okay. Let me just add to what Anshul just said. You know, I've been watching IPL and the T20 series quite regularly, and what I find is very often when somebody is out and the new batsman comes in, I take about it takes me about 2-3 overs before I know who's batting, because nobody mentions who's come in. Yes, sir. Yes, very right. While they mention it on the screen, they show it on the screen, and then very often we don't know who's bowling. You know. Yes, So sir. I'm not saying that the people should keep talking, but there are certain key things which needs to be mentioned. Yeah, I think the next time I do cricket, Yeah. I will actually ensure that we say these things, because I mean, according to me, every time a batsman comes in, there's a certain protocol in television. They show the batsman walking in, they show the batsman settling down, and the commentators invariably say, and the next man in, George Abraham. Now he's walked in at a pretty difficult time. The side lost 6 wickets and he's got to settle down, but he doesn't have the time. He has maybe 3 or 4 deliveries before he can start out hitting, because they need 28 more, and he's got only 11 balls. So set up the karte hain yaar. They may not say that, okay, now Shami continues or whatever, Charu. So the bowler, it's presumed that you were listening to the same, the bowler remains the same. But सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी में बात करें ताकि सभी समझे. यार मैं अभी तो कर ही रहा हूँ यार. और जॉर्ज से क्यों नहीं बोलते तुम? ठीक है. So let's get on to the next question. There are quite a few people who have raised their hands. Murli, would you please go ahead and ask your question? Yeah, hi Charu, hi George. Good evening, greetings from Bangkok. Oh, wonderful, wow. Charu. Yeah, hi. I'm a great fan of you as a cricket analyst. I'm a regular listener to this Stumped with Alison. Oh, fantastic! So good to hear that. Thank you. You and one more All India Radio old commentators. It's fantastic. No. Alison Mitchell comes in from the UK. UK and Jim Maxwell. You and there is one more person for All India Radio. I don't remember. Once in a while. I mean, I do it most of the time. Once in a while, I'm not free. I think Sunil Gupta does it. Sunil Gupta, that's right. Last week, they were talking about the Ashes. Yeah, fantastic. And hats off to you for talking about the topic of inclusive sports, inclusive commentary, and inclusive infrastructure which is coming up. In fact, I promote inclusion here with the UN. I work for the UN here in the regional bureau, Asia Pacific. I was never smart enough to work for the UN. Sorry. It's a long journey. Yeah, I just commenced. I'm a good friend of George. I started playing blind cricket. I became blind after 25 years. But still, I remember you dancing in the South African, the Johannesburg test. I still remember. That is what. In fact, I grew up, listening to commentary, picked up some Hindi, my broken Hindi, because I come from the South, typical Chennai region. And second thing, we shaped up our language, especially listening to BBC and commentators like you. And of course, people spoke about the challenges, because when you tell the score at the end of the over, the advertisement takes over. So it's an overshadowing issue. The second thing, getting into the hardcore cricket. I have colleagues who are from Australia, New Zealand, and England. So I speak a lot. My question to you is, do you think the current Indian men's cricket team is in a transition still? Are we not yet settled down? Because we still, or is it because we have too many players to rotate? Because if you see, I don't see the solidity in number 3 or number 5 after VVS or my own favorite thorough gentleman. Yeah. So Murli, it's an interesting observation about the Indian team. Normally, in any team for any sport, there is a period of transition where some of the players are either old or they have to leave because they're not in good form and new players come in. This period of transition, and when we say a team's in transition, is very relevant, or should we say is directly proportional to the lack of talent. Now, Murli, you understand a bit of Hindi also, right? Yeah.
So, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी टीम से लोग जा रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स या किसी कोई फॉर्म में नहीं है तो जा रहा है, और जूनियर प्लेयर्स या अलग लोग आ रहे हैं उस टीम में, तो अगर किसी देश में या किसी टीम में प्लेयर्स की कमी है, तो वहां ये ट्रांजिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मान लीजिए आजकल जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज देख लीजिए, हाँ जी, वेस्ट इंडीज को देख लीजिए, जहां प्लेयर्स कम हैं, वहां ये ट्रांजिशन जरा तकलीफ देता है और देना चाहिए। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहां हजारों सैकड़ों प्लेयर्स हैं, यहाँ ट्रांजिशन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारी टीम में ट्रांजिशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं मुरली, तो किसी का भी प्लेस कभी भी ले सकते हैं। उनमें इतना टैलेंट है, इतना हंगर है, इतनी एबिलिटी है। Yeah, because we played parallel. India sent 2 teams internationally, one to Sri Lanka, one to England, right? Yeah, that was almost the third team. Anyway, so we have that many people, and therefore our transition problems are not legitimate. मतलब हमारे जो टीम में बदलाव आता है प्लेयर्स का, who has said, somebody said speak in Hindi, यार मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो बदलाव आता है प्लेयर्स का, ये इंडिया के लिए खास तौर से इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब आप बोलें कि राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर कहाँ आएगा? अरे कोहली आ गया ना, तेंदुलकर कैसे आएगा? अरे कुछ कोई और आ गया ना, तो ये लोग आते रहेंगे और बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवरसीज टूर पे, जैसे कि इस बार साउथ अफ्रीका में उनकी टीम काफी कच्ची थी, साउथ अफ्रीका, फिर भी हम बड़ी बुरी तरह से हार गए। लेकिन पिछली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तो जीत गए, और किन से जीते? ये जो प्लेयर्स थे जो ज्यादातर नए थे, शार्दुल ठाकुर वगैरह और बाकी लोग जिन्होंने अच्छा वहां पे प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे टैलेंट की इंडिया में क्रिकेट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। अब क्या है कि ट्रांजिशन हम अगर सिर्फ ये साउथ अफ्रीकन टूर से जोड़ें, तो ऐसा लगता है कि जो खिलाड़ी थे वो कुछ मतलब ठीक तरह से खेल नहीं पाए। तो ट्रांजिशन तो कम ही था, पुजारा था, रहाणे था, ये ट्रांजिशन प्लेयर्स थोड़ी है ना, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, दिग्गज हैं। सिर्फ ये होता है कि ओवरसीज कंडीशंस में मुश्किल होती है ज्यादा। अगर ये टूर, जैसे कि अभी इंडिया का में टूर शुरू होने वाला, वेस्ट इंडीज आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ कोई ट्रांजिशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, करेगा 3-0 दब जीतेंगी इंडिया। तो इंडिया में कोई ट्रांजिशन का प्रॉब्लम नहीं है, बाकी देशों में थोड़ा बहुत जरूर है। और इंग्लैंड में खास तौर से वो अपनी उनकी खुद की बनाई प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि हम रोटेशन पॉलिसी को बहुत आगे बढ़ाएं, क्योंकि किसी को प्रोटेक्ट करना है, किसी को इंजरी ना हो, कोई खेलना नहीं चाहता, कोई मेंटली अनस्टेबल हो गया फलाने का, तो इसलिए हम कुछ कम मैच खिला के सबका मिक्स करें। तो उसमें भी कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर प्लेयर अपने स्पॉट के लिए उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये अगला मैच खेलूंगा कि नहीं, तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर में आके कभी कभी परफॉर्मेंस और भी खराब हो जाता है। Thank you. Most welcome. Insightful. Thank you. Subramani, please go ahead and ask your question. Hi, Charu. My name is Subramani. Hi, Subramani. Yeah, we've met once in Bangalore. I work for Deccan Herald. Okay. Good old DC. Or DH. Sorry. DH, yes. No, I wanted to ask you, what are your challenging kind of assignments or challenging passage of play that you happen to commentate, or any kind of gaff that you may have to cover up? Are you kidding? 10 gaffes a day? I mean, how many do you want? नहीं, देखिए, अब चैलेंजिंग तो एक तरह से हर असाइनमेंट होती है, और मेरे लिए खास तौर से बिकॉज आई एम वेरी मल्टी स्पोर्ट, सुब्रमण्य, मैं काफी स्पोर्ट्स के बारे में बात करता हूँ, तो हर एक बार कोई मेजर स्पोर्टिंग असाइनमेंट मेरी तरफ आती है तो मुझे काफी होमवर्क करना पड़ता है, क्योंकि एक बेसिक लेवल पे तो मैं सब स्पोर्ट फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एडवांस लेवल में जाके थोड़ा सा उस इवेंट के पहले और मेहनत करनी पड़ती है। और खास तौर से जो पहला दिन होता है, मान लीजिए अब मैं जा रहा हूँ टाटा ओपन महाराष्ट्र, जो इंडिया का एकमात्र एटीपी टूर्नामेंट होता है, हर साल होता था, पहले चेन्नई ओपन उसे बोलते थे, अब वो टाटा ओपन महाराष्ट्र हो गया, पिछले कुछ सालों से पूना में हो रहा है, 2 साल से तो हुआ नहीं कोविड की वजह से, अब वापस हो रहा है। मैं परसों जा रहा हूँ वहां पे, और पूरा 1 हफ्ते का टूर्नामेंट है। पहले दिन हमेशा या तो अपने आप की वजह से या प्रोडक्शन टीम की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन टीम भी थोड़ा सा लड़खड़ाती है पहले दिन, कुछ ये गड़बड़ हो गया, कहीं कैमरा इधर हो गया, कहीं साउंड गड़बड़ हो गया, ये सब चीजें पहले दिन हमेशा थोड़ा सा टेंशन देती हैं, क्योंकि लोग तो ऐसा नहीं कहेंगे चलो पहला दिन है कोई बात नहीं, लोग तो बड़े तगड़े ही होते हैं, चाकू छुरी निकाल के, यार ये क्या बोल रहा है, या ये क्या कर रहा है, या साउंड कहाँ चली गई, ये कैमरा क्या कर रहा है।
तो इसलिए पहला दिन हमेशा हर असाइनमेंट में थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। और गैफ तो यार मतलब हर रोज हर बार कमेंट्री में 2-3-4 तो हो ही जाते हैं, तो गैफ ना हो ये तो असंभव है। लेकिन जब गैफ कुछ होता है या कुछ मतलब उल्टा सीधा आदमी बोल जाता है कुछ या सही ना बोलता है, कुछ इनएक्यूरेट चीजें बोल जाता है, तो वहां से निकलता कैसे है, किस मतलब स्मूथनेस से वहां से निकलना है, वो एक अलग कला है। और वो धीरे धीरे जब कमेंट्री में एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो कला लोगों में आ सी जाती है, और उसकी वजह से सुनने वाले को भी ऐसा नहीं लगता कि अरे क्या बोल गया नाप शनाप, क्योंकि वो कहते हैं चलो इसने माफी मांग लिया, चलो आगे बढ़ गया, या कुछ हंसी मजाक से निकल गया। तो ये जो एक कला है ये डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि अरे मैंने गलती कर दी या कुछ गलत नाम ले लिया और मैं अपने आप में भारी पड़ जाऊं, अपने आप को कोसने लग जाऊं, तो फिर आगे की जो कमेंट्री है वो भी थोड़ी सी खराब सी होती जाएगी। सो अगर कुछ मिस्टेक हुई, वहां से निकलना और उसको छिड़क देना बिल्कुल, टू हैव अ लाइट स्किन, ये बहुत जरूरी कला है। वैसे डिफिकल्ट असाइनमेंट्स में तो बहुत गिन सकता हूं मैं, लेकिन एक शुरू में जो प्राइवेट टेलीविजन जब आया तो 94 में एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट की, जो मैंने हाँ तो बोल दिया, हाँ बोलने के बाद मुझे लगा यार ये मैं क्या कर गया। क्योंकि अगर आपको, सम ऑफ यू मे रिमेंबर, in 1994 there was the world chess championships in Sanginagar near Hyderabad, because Vishwanath Anand was right at the top. That was the world championship cycle. पहले क्वार्टर फाइनल्स फिर सेमीफाइनल्स, दोनों वो सांगी जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने स्पॉन्सर किए, तो सांगी नगर में हुए थे। और मैंने कहा यार बाकी सब तो मैं बहुत जानता हूँ, बहुत खेला, बहुत किया, ये चेस मैं पहली बार कर रहा हूँ और वो भी वर्ल्ड चेस क्वार्टर फाइनल। तो थोड़ी बहुत मेहनत तो की मैंने, और लकीली मेरे साथ एक माइकल एडम करके ग्रैंड मास्टर होते थे यूके के, उनको एक एज एन एक्सपर्ट कमेंटेटर बिठाया, तो उनकी वजह से बहुत फायदा हुआ। लेकिन वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, और मैंने कहा कि भाई बड़ा एक क्लेवर मिक्स होना चाहिए कि मैं ज्यादा न बोलूं, जैसे कि मैं जानता ही हूँ, मैं इससे बुलवाऊं, लेकिन बीच बीच में मुझे बोलना था जरूरी कि भाई आप बोल रहे हैं ABCD, तो CDPA भी तो हो सकता है। और कभी कभी माइकल एडम ने मेरी तरफ देखा और बोला अरे बिल्कुल सही यार, दैट्स अ बेटर मूव। तो क्या आई टेल यू, आई वाज लाइक 10 feet tall then। मैंने कहा ठीक है यार, ये भी ले लेंगे अपनी लपेट में। बड़ा मजा आया, लेकिन मुश्किल असाइनमेंट। Thank you very much, and I hope that was also the way you describe how you kind of break down the complex moves into simple explanation for the listeners or viewers. Well, exactly, yaar, because people also, commentators sometimes make the mistake of trying to speak for the pundits. तो कई बार commentators क्या है कि जो खिलाड़ी होते हैं वगैरह वगैरह, वो सोचते हैं कि मेरा जो खिलाड़ी है, मेरा जो टीममेट है जो 50-100 टेस्ट खेल चुका है, तो मैं उसके लिए सिर्फ बात करूं, या सिर्फ पंडित्स के लिए जो मतलब बहुत ज्ञानी होते हैं। वो मेरी राय में सही नहीं है, क्योंकि 98% ऑफ द पीपल लिसनिंग आर नॉट पंडित्स, दे आर जस्ट रेगुलर फैंस, लिसनर्स, पीपल वांट टू एंजॉय द गेम। तो काफी जो खिलाड़ी कमेंटेटर्स होते हैं ये एक गलती करते हैं कि ये सोचते हैं कि मैं ये सिंपल चीज क्यों बोलूं, इस चीज को मैं सिंपली क्यों डिस्क्राइब करूं। तो कभी कभी लोग उल्टा ही सोचते हैं कि अगर हम अपने स्पोर्ट को कॉम्प्लिकेटेड रखें और कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, तो लोग सोचेंगे हाँ यार बड़ा मुश्किल खेल है, ओहो बड़ी मुश्किल चीज है। उल्टा ही है भाई, खेल कोई मुश्किल चीज नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस यार। जाके थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा अपना पसीना बहाओ, खेल बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ओहो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। अरे मेहनत करो तो कोई भी कोई खेल खेल सकता है। Thank you, Charu. You're welcome, Subramani. चंद्रनाथ जी, अपना सवाल पूछिए। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर दीजिए। और चंद्रनाथ जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि कोई सवाल ही पूछे, ये नहीं कुछ, अगर कोई आप अपनी कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, कुछ एक गाना ही गाना चाहते हैं, ठीक है ना यार। सिर्फ सवाल की जरूरत नहीं। चंद्रनाथ, somebody help him unmute यार। Taha Babu. Okay. Thank you, Charu and Sabnam and all. George, a special thank to you for arranging such a wonderful program. Actually, I have so many questions, but the time is very much limited. One thing I see today that most cricketers in particular, cricketers are coming into commentary team. And that's why
the standard of commentary, of course, there are some exceptions. The standard of commentary is now decreasing day by day. This is my observation. Yeah, Chandranath, yeah, let me reply to that, because it's actually very wrong of me to be involved with this discussion, because I'm an interested party. Agar main judge hota, I would have recused myself from this discussion. but the truth is this, Chandranath, that that मैंने कहा था ना, if you were listening, कि commentator के लिए क्या चाहिए? George will repeat. King George will repeat. बताओ, King George. Basically, knowledge. नहीं, knowledge तो यार 50 रह गई ना. तो 50 knowledge के बाद क्रिकेटर का ज्यादा है, लेकिन हाँ, फिर उसके बाद 45 मार्क्स के लिए. हाँ, मैंने भी ऐसे ही मार्क्स नहीं दिए, मतलब simplifying the things for the people. That is more important. 45 more marks are for the language that you use. अब क्या होता है कि काफी क्रिकेटर्स वो कहते हैं कि यार ये खेल तो मुझे मालूम ही नहीं है ना, मैंने खूब खेला है, खेल में मेरी नॉलेज में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है. लेकिन उसके बाद जाके डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव पावर्स या कम्युनिकेशन पावर्स या लैंग्वेज पावर्स में वहां थोड़े से वो मेहनत नहीं करते. तो क्या होता है कि वही चीज दोहराते रहते हैं, और एक तरह से कमेंट्री थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि भाई हमें मालूम है आपके खेल मालूम है, लेकिन आप जिस तरह से हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कमेंट्री करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसमें रस भी तो रखिए, थोड़ा सा मजा भी तो रखिए, थोड़ा सा आगे भी तो बढ़िए, तो एक बढ़िया तरह से हमको समझाइए ना. तो वो कभी प्लेयर्स क्या करते हैं, वो इतनी मेहनत नहीं करते, वो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई मैं तो फलाना हूँ, मुझे तो सब लोग जानते हैं, मैं तो खेला हुआ हूँ, तो मैं कुछ भी बोलूं, कैसे भी बोलूं, आपको क्या है. तो in other words, they're not as respectful to the trade, to the business, to the concept of commentary as they should be. And Chandranath, that's why, unfortunately, commentary standards tend to, I hesitate to use the word, but they tend to slip a bit, because yes, there's a lot of knowledge, but the communication powers may be limited. तो इसलिए कई खिलाड़ी, और ये सिर्फ हम क्रिकेट में देखते हैं, आप अजीब सा ये एक बहुत अजीब सा ट्रेंड है जॉर्जी, आई डोंट नो, यू हैव टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, बिकॉज सिर्फ क्रिकेट में, और क्रिकेट भाई किस खेत की मूली है यार, हर एक स्पोर्ट अपने अपने खेत की अपनी अपनी मूली, लेकिन सिर्फ क्रिकेट में ओनली फॉर्मर क्रिकेटर्स आर brought in by the production teams and the channels. बहुत कम जो बहुत ऊंचा ना खेले हो, क्रिकेट टेस्ट वगैरह मैच ना खेले हो, उनको कमेंटेटर्स क्रिकेट में लेते हैं, जो कि बिल्कुल अजीब सी चीज है, बिकॉज बाकी भी जो खेल हैं, बड़े बड़े खेल हैं, महारती खेल हैं, वहां लोग ये नहीं कहते कि आप खेलें कि नहीं खेलें. अगर आप अच्छे कमेंटेटर हैं, आपको स्पोर्ट की नॉलेज है, और स्पोर्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, है ना. अगर आपको स्पोर्ट की बढ़िया नॉलेज है और बढ़िया आपके लैंग्वेज की नॉलेज है, आप आइए ना, कमेंटेटर बनिए और वर्ल्ड फेमस कमेंटेटर बनिए. तो बाकी खेलों में ये एक जो नखरा सा है कि हमारे सिर्फ पुराने जो हमारे बहुत ज्यादा खेले हुए खिलाड़ी हैं, उन्हीं को कमेंटेटर बनाना चाहिए, ये एक ऐब सा जो है, ये सिर्फ क्रिकेट में है. बड़ी अजीब सी बात है. अच्छा, second topic which I really want to mention is that regarding the selection of Indian cricket team in different perspective, what we see that of course some people are very good player in spin, but not so good in pace. But when someone gets entry to the team, it's very difficult to get him out of the team. So, good observation. Again, that is a very kind of generally, if I may say so, an Indian thing. हम क्या है कि जब आदमी थोड़ा सा ऊपर चले जाता है ना, पहुंच जाता है किसी कुर्सी पे, तो हम उससे थोड़ा सा डरने लगते हैं. तो जो आगे बढ़ जाता है, उसके साथ हमारी जो डीलिंग होती है, वो सडनली हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर टाइप हो जाती है. अभी तो मैं कहता है, हे जॉर्ज, हाउ यू डूइंग यार, और जॉर्ज बन जाए कोई मिनिस्टर, तो मैं हेलो सर जॉर्ज, हाउ यू सर, गुड मॉर्निंग सर. तो ये जो हमारा एटीट्यूड में चेंज हो जाता है ना, ये एक प्रॉब्लम है. क्योंकि कोई इंडिया खेल गया, तो फिर उसको थोड़ा सा वहां उस कुर्सी से नीचे करना, या उसको थोड़ा सा टीम से बाहर करना, फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, खेलने दो यार, अभी तो इंडियन क्रिकेटर हो गया, बहुत बड़ा हो गया. इसलिए हमारा जो चेंज पॉलिसी है, वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है. अगर कोई 3-4-5 मैच खेल गया और ढंग से नहीं खेला, तो हमने कहा यार आप थोड़ा बैठो, कोई और आएगा. पहले लोग 15-20 साल खेल रहे हैं यार इंडिया के लिए. अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो खेलने के लायक नहीं है, लेकिन इतना लंबा किसी को किसी टीम के लिए खेलना, ये
कई और लोगों को जो जिसकी काबिलियत अच्छी हो, those people who are very talented get thrown by the wayside and they never get a look in. So I think India is finally changing now, Chandranath, and more people are getting opportunities than ever before. Also, of course, there's test matches, one days and T20s. And of course, the IPL. So many more cricketers are getting opportunities to play for India or to play for some major team anyway than before. But we are changing. You will notice, Chandranath, that नए लोग आ रहे हैं और काफी तादाद में आ रहे हैं. और ये जो बदलाव है इंडियन टीम में is happening much more quickly than 10 years ago, which is a good sign. I'm not saying that people should be deliberately thrown out from the team, but if you're not performing for a while, there are 10 other people who can take your place here. Take one of them, and whoever's been given a chance goes back into the queue. तो जब आपको मौका मिले, जो 3-4 लोग हैं आपके बाद में, उन्होंने अगर चारों ने ठीक नहीं खेला, तो आपकी चांस वापस आ जाएगी. तो ये जो बदलाव है, जो साइकिल है, ये अब इंडिया में शुरू हो रहा है. To a little extent, you are. Yeah, it's beginning. It's beginning. It's beginning. Yes. It's just the beginning, right? Yes. Right. Now, what I like to mention is that you must look into the matter that whoever playing good pace, whoever facing very good in pace, then they must get a chance in abroad. So we may give chance to many 2, 3, 4 openers there, so that they can. You ask a very important point, Chandra. I'll try and be quick because you might get better against pace, and the first 4 batsmen tend to be better against pace anyway. But even if you're better against pace in India, when you go overseas, the conditions are so different that even those who are generally good at facing pace in India will start having a problem there, because the conditions, the bounce, the cut, the amount of grass, all these things play a very relevant role when it comes to the pitches they play on. So the top 4 or 5 batsmen are always those who play pace well, but that's no guarantee, because as a batsman, remember, you get no second chances, Chandranath. It's a brutal world. One touch, one clip, one mistake, and you're gone. And even in South Africa this time, it was so difficult. You're batting on 30, 40, 50. You've done all the hard work, and yet one ball will take you, because it's moving all over the place, it's bouncing a lot more than you think, and so on and so forth. So this is a complicated art. And yes, you're right. I mean, we obviously need to take batsmen who are particularly good against fast bowling when we go to countries such as England, Australia, New Zealand, and South Africa. But because the conditions are so alien, it's very difficult. And those who do well in those conditions, we have to take our hats off to them, because it takes a very special effort. And last question, because so many people are waiting. See, in South African Indian team, we had Charu Sharma, who had a tremendous height and who had bounced. All the pitches were bouncy pitches, yet he was not given a chance. How would you explain that? Yeah, 2 or 3 reasons. One, his fitness has been suspect for quite a while. So why have you taken him? Why have you taken him? Because you feel that he may be able to play the role. If he is 100%, maybe he's 100%. Also his confidence, also his abilities. And I really shouldn't be saying this, because I tend not to criticize. But the truth is that Ishant is no longer the bowler he was. His skills have waned. They have reduced quite a bit. There were younger, hungrier bowlers whom they tried to depend on. They bowled pretty well to begin with. Then they also got injured. Then how many fast bowlers can you take? So in that last match, they went with Umesh Yadav. They could have gone with Charu Sharma, but they just felt that Ishant is not that accurate anymore. He's not, cranking up the pace anymore. And he tends to go play a few overs and then he'll catch his leg and go out. तो मुझे लगता है कि ईशांत पे जो कॉन्फिडेंस इंडियन टीम का कम हो गया. नाउ यू आर राइट, उसको ले ही क्यों गए? अब भाई पास्ट परफॉर्मेंस पे भी कभी-कभी लोग अपना लास्ट टूर या कभी-कभी चले जाते हैं कि चलो यार इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम शायद इसको यूज कर लेंगे. लेकिन उन्होंने सोचा कि इसके पहले जो यंगर हैं, स्ट्रॉन्गर बॉलर्स हैं, जिनके पास लिटिल मोर एबिलिटी, लिटिल मोर कॉन्फिडेंस है, उन्हीं को खिलाना चाहिए. So this selection matters a very, very difficult matter, Chandra. It's not easy at all. And I have always said कि अगर मुझे 2 चीजें ऊपर वाला कितना भी पैसा दे, कुछ भी करे, मैं नहीं बनना चाहता. मैं ना सेलेक्टर बनना चाहता हूँ और ना अंपायर, because you can never get it right 100%. You can never get it right 100% of the time.
Thank you. Let's move on to the next question. Next person. शेखर, आप अपने एंड से अनम्यूट कीजिए प्लीज. आई वांट से अपना सवाल पूछिए आप, जैसे सर ने बोला है जो हाँ भी जी, पूछना चाहे. कुछ भी बोलो यार. शेखर अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से. हाँ जी. Hello. हाँ जी, बताइए. Yeah. Hi, Charu sir. Good evening. Hi, Shekhar. Sir, one more person who listens to you regularly on Stumped Quickly. कमाल है यार, मैं तो आज तो मैं ऊपर से मैं तो 10 फुट लंबा हो गया आज. So thank you. And those who don't know would like to tell the listeners here that it's you can listen on YouTube. Prasar Bharati has its own YouTube channel, so you can subscribe there. So every 15 days you get that you can listen to Harsha and Charu sir and others who come and discuss. It's a very good discussion. Please listen to it. Thank you, You'll enjoy. Everyone will enjoy a lot. You guys are my best friends I today. have Murli. one question, Charu sir, regarding the transition phase. If I want to add one point, is Test cricket itself is in transition phase. Yes. Because what I feel that since 2005 I'm following cricket. So at that time I used to see around 7 to 8 teams who are very competitive enough to play Test, but now it's hardly 3 to 4 teams. So what might be the reason? Is it the Shekhar, T20? Yes, if you're a regular listener of Stumped, you'll know my views on that. On one hand, I am as traditionalist as most of you people here. We all like Test matches. We've grown up on Test matches. There's a certain romance attached to tradition. कि अरे यार वो भी जमाना था जब हम सिंगल मूवी हॉल में जाते थे, सिंगल शो, जब क्या बोलते हैं सिंगल मूवी, सिंगल स्क्रीन मूवी हॉल में जाते थे और वहां पॉपकॉर्न खाते थे और ये करते थे वो करते थे. वो गया भी जमाना. अब हम मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, ठीक है ना. तो अरे वो भी जमाना था, वो बहुत बढ़िया. हमारे वो जो तांगे थे ना, हम तांगों में जाते थे, बहुत मजा आता. अरे गया भाई वो. अब गाड़ियां हैं, स्कूटर है, फलाने. सो it's okay to hang on to something nostalgic and beautiful and nice. My great grandfather, उस टाइम जब पेट्रोल के लिए हम जाते थे तो वो 2 पैसे का 1 लीटर आता, वो सब खत्म हो गया है. अब क्रिकेट भी आगे बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? क्योंकि हर एक स्पोर्ट को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक मिक्सचर है हाइड्रोजन और उसका H2O का, कि उसमें एक तो कमर्शियल जहां अटेंशन आती है वही चलता है ना. अगर आप बोले कि मैं यही जूते बेचूंगा और कोई खरीद नहीं रहा वो जूते, तो आप बंद कर देंगे ना बनाना. कि आप कहेंगे मैं तो यही बनाऊंगा, आपको पहनना तो ये पहनो. काय को भाई, हम कुछ और पहनना है. तो जो आजकल का एवरेज फैन है, जो नया फैन है, वो कहता है भाई हमको तो एक्साइटमेंट चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है ये 5-5 दिन बैठ के देख लो पागलों की तरह. तो हमको ये 3-4 घंटे भी बहुत होते हैं. थोड़ा बहुत देख लिया, थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि बहुत चीजें आजकल, हजारों चीजें, ये कंप्यूटर पे, इस पे, उस पे, फोन पे, 20 चीजें. तो our attention spans have all reduced here, and because of that, Shekhar, Test matches are under a grave threat because of the amount of time you require. Cricketers अब भी बोलेंगे क्योंकि उनको तो बोलना ही है, उनको तो अपना घर है, वो उसको बचाना है, संभालना है. ओ टेस्ट मैचेस ओरिजिनल है, अल्टीमेट टेस्ट. वो ठीक है यार, अल्टीमेट टेस्ट है, लेकिन अगर टाइम उसके लिए नहीं है, अगर लोग नहीं देख रहे, उसके लिए अगर पैसा नहीं आ रहा, उसका अगर खेलना नहीं चाह रहे, तो ये सब धीरे धीरे चले जाएंगे. एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट यार. तो अगर वनडेयर्स भी अगर थोड़ी आगे जाके मुसीबत में जाएंगे, T20 T10 ही बच जाएगा. और ये दुनिया का ये असूल है यार, कि जो जहां बदलना चाहिए, whether you like it or not, वो बदलेगा, है ना. तो अगर हम बोले कि भाई तांगे क्या बढ़िया होते थे यार, अब आपको तांगा है कोई नहीं है ना. गाड़ी में जा रहे हैं ना, आप कोई बैलगाड़ी में जाएंगे यहाँ से वहां तक, बैंगलोर से हैदराबाद कोई बैलगाड़ी में बैठ के जाएगा नहीं ना. तो ये these changes are natural यार शेखर, and they will happen, and we can't hang on to something because we liked it and it was nostalgia and beautiful and all that. Well, gaya yaar. So test match, as it is, cricket's in trouble. You were saying 7-8 countries in the past. Test matches of 3-4 countries में भी ढंग का नहीं हो रहा. So eventually it will go. The cricket establishment is very keen to hang on to it, but धीरे धीरे जैसे कि रस्सी पकड़ रही है किसी ने, उसके हाथ फिर ढीले होते जाएंगे, वो निकल जाए. In time. I'm not saying it's good or bad. I'm just saying that's how the world is. And the newer fans who are much more important, our base,
will probably want only short form cricket. So ठीक है यार, अब क्या करें? करना पड़ेगा. Can I ask a question? Yeah, go ahead. Go ahead. Yeah, hi Charu, this is Siddharth. Hi Siddharth. Hi. So I never knew that you were a diver. That's great to know. Yeah, Well, thank seriously, you. never knew that you were a diver because I used to love watching the sport of diving. Yeah. And in beautiful. fact, Greg Louganis was somebody who I watched a lot way back in the 80s. Good. He's a big hero of mine too. Yeah, big hero of yours too. Okay. But I had stopped diving by then. Though. My You diving stopped ended diving in by then, 70s. yeah. I guess so. He was in the 84 Olympics time around that time. Yeah, I think. Yeah, sorry. No, he was in Yeah. the So what I was saying was, have you ever had the chance to do commentary for a blind cricket match? You know, we've had a couple of World Cups and we've all been part of it, George. Yeah, Siddharth, I mean, who has the power to invite me? King George. अब King George ने बुलाया नहीं. तो हम बैठे हैं घर. I'm surprised नहीं बुलाया. I'm surprised. Because we had so many cricketing greats. देखिए Amongst us. घर की मुर्गी दाल बराबर. और जॉर्ज बोले कि ये तो मेरा दोस्त है यार, छोड़ो इसको यार. No, but he felt you are senior citizen. तो ठीक है. No, okay, that's one. That was question number one. Question number two, quickly, is see, everybody knows you as Charu Sharma, the cricket commentator. I mean, everybody knows that. Today, I'm getting to know a little more about you and the various facets of your involvement with sports. Besides cricket, what are the other two sports that you really love commentary on? I mean, you especially doing commentary. Yeah, this is now, I mean, it's Siddharth, if you had 20 children and I'm asking you to rank them in order of preference, so tum to phas jaoge na. So no, I actually love so many sports. It's not funny. Ab hota kya hai yaar ki, you know, the ones that you're more actively involved with are the ones that get left with you or remain with you. These days, I play a lot more golf and I play a lot more tennis. तो ये दोनों अब तो favorites होने ही हैं यार. And I play the occasional bit of cricket. लेकिन बहुत ऐसे खेल हैं which I love. And as all of you may or may not know, I co-founded the Pro Kabaddi League. तो हाँ, cricket और हाँ कबड्डी. हाँ जी, तो अगर मैं बड़ा immodestly बोल सकूं, वो मैंने बनवाया. और बहुत बढ़िया चला. ऊपर वाले ने बहुत मदद की. It's like India's second most watched sport. But I'm also fond of a few other sports. I mean, I love badminton because it's played so much. It's fairly popular in India. I love athletics. I've done a fair amount of athletics. I did so at the 2012 London Olympics also for Doordarshan because they've taken me there. Because athletics itself is like a wonderful multi-sport environment. कभी track हो रहा है तो कभी field हो रहा है, कभी ये throw हो रहा है तो कभी marathon हो रही है, तो कभी कुछ हो रहा है तो क्या, कभी relay हो रही है. And there's just so much excitement on the athletics field all the time that's one of my favorite. They call it the mother sport anyway. Is one of my favorites. So अब मैं यहीं बंद कर दूं, नहीं तो फिर और मैं गिनते ही चले जाऊंगा. Thanks. Yeah. You're most welcome, Siddharth. Thanks for joining us. Thanks. Rangaswamy, would you like to ask something? Or say something. Raise your hand. Or say something. Please unmute yourself. By the time he unmutes himself, yeah, Georgie, Shabnam, how much time do we have? What's the deal? It's 6:15. So I would like to ask you, how much more can you spare? 10-15 minutes more? हाँ यार, 10 मिनट तक करते हैं, 10 मिनट, if it's okay. 6:30 will wind up. 6:15 हो गया अभी. हाँ, तो 6:25. 6:30 मुझे कहीं होना था यार, मैं माफी चाहता हूँ. 6:25. So while he's unmuting, can I play my second innings, Charu? No, wait. There are others who want. Are there others who have put up their hands? Yes, Salil. Salil, please unmute yourself. Hi, Charu sir. Good evening. Hi, Salil. Sir, it's a pleasure and honor talking to you. Very kind of you, sir. आज तक आपका आवाज सिर्फ रेडियो पे और दूरदर्शन में ही देखा और सुना. But it's always a pleasure, listening to you. So I have two questions, quick ones. Number one, how do you see IPL in terms of, growth of cricket in India? And second one, who is your favorite commentator or
I would say rather your idol. Okay. Second वाले तो फिर फंस जाऊंगा मैं. कहाँ से शुरू करूँगा? But yeah, I have some commentary. I'm, because sometimes personal biases also enter. Yeah, I'm only human, right? So Right. I mean, you may not like George. I like him. I'm only human. He's my classmate. So ठीक है यार. So No, everybody likes George, sir. I know. So yeah, I had a, because I know him from school and college and onwards. These days, unfortunately, he doesn't do very much. But I was very fond of Arun Lal. We had spent many years together doing commentary. Ramiz Raja is a close friend, so we enjoy being together and commentating. Ian Bishop understands the medium really well, and he goes up and down very well. Ian Chappell, although he's a little crusty, also understands the medium very well, and I've enjoyed many, wonderful times with them. So I've mentioned 3 or 4 names, and I hope that's okay for that answer. But I will go to your first, which is Salil, remind me about IPL. Now, the hallmark of the development of any sport is whether it becomes professional or not. Because once it becomes a profession, then it brings out the best in you. If you're a part-time casual doctor, ठीक है यार, आ जाओ यार, कभी देख लेंगे यार तुमको क्या हुआ. Versus the fact that you are somebody who spent 20 years a hard doctory trade, makes a big difference, right? You're being remunerated for it. Your whole house runs on it, so you pay so much more attention to it. Absolutely correct. Similarly, of course, when a sport becomes professional and people start earning their livelihood through that sport, that is a sure sign that that sport will improve leaps and bounds, because everybody's working really hard for the pot of gold, on the rainbow, at the end of the rainbow. So when people start working really hard because they sense that they can make a livelihood in that sport is bound to succeed, is bound to improve, is bound to be bigger and better. That's what the IPL has done for cricket in India. And many other cricketers around the world. It's given them a sight of the fact that what they work really hard at can be a source of livelihood. And not for one, for many more now. Similarly, any sport that offers a professional league, as the Pro Kabaddi League does, you can imagine the improvement in the life of all the top Kabaddi players of India and the numbers that are coming in. Football, or whether it's any other sport. The other professional sports that do not need a league but are doing really well internationally, golf, tennis, badminton, all these have, football, of course, the big one, all these have set professional leagues. And that's why standards are improving hugely in terms of fitness, in terms of whatever else, stamina, etc., because people feel, yeah, this is my performance, is my pay package. If I play really well, I'll be paid really well. So no question that the IPL has made that very big difference in making cricket a professional sport, which is very important, because in the past, or even now, for a country, when you play for India, you go to South Africa and you're paid, मान लीजिए, 100 rupees. You win all 6 matches, you lose all 6 matches, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, you get 100 rupees when you come back. तो ये कैसा profession हुआ भाई? So that premium on winning is very important in the world of sport, whether some people like it. Right. Thank you, sir. Most welcome. So where are you from, yeah, Jandyal? Sir, I'm basically from Jammu and Kashmir, but right now in Bombay. Okay, Jandyal, मैंने कहा ठीक है, भाई हमारे नॉर्थ में कुमाऊं वगैरह में काफी DYAL हैं, जो यार ये वो देखिए. Right, sir. Right, sir. Pleasure talking to you. Likewise. Rangaswamy, have you managed to unmute yourself or not yet? Probably not. Somebody has asked a question. What is one of your most enjoyable moments when you've been covering cricket? Oh gosh. I think that first tour of South Africa was very, very memorable. And then later the next year, or that same year in 1997, I was sent by Star to do the New Zealand tour, Indian tour to New Zealand, which was also very memorable. What happened there was not only all the cricket and the beautiful country that it is, I went with some other producer from Star about 15 days before the tour started to do a big series on tourism in New Zealand, which we kept playing during the breaks. So bada maza aaya. Kya nahi kiya New Zealand, everything that had to offer. I went there, did short pieces for about a minute or so, which they played out during all the breaks. So, when you do something apart from just the cricket, I think that completes the tour, because cricket, match after match after match, everything becomes one, And I'm not saying it's boring. It's just that how do you take a special moment out? Of course, there are many special moments in terms of special wins or losses or whatever.
you enjoy over a period of time, it all becomes one. But you remember these other special moments. South Africa is a great place to visit. I mean, Cape Town became such a, and we did the 2003 World Cup from there for Sony. We had this beautiful studio on the roof of one of their malls, looking in onto the Table Mountain behind us. Beautiful setting. I was there for 2 months, did all the 2003 World Cup. Luckily, it was very heavily seen because India got all the way to the final, where unfortunately they got thumped. But it remains a beautiful memory. South Africa in 2003 World Cup. Do we have time for one small question? Yeah, please go ahead. Yeah. So sometimes, or actually quite often as well, sometimes we actually feel the matches happens for the loss. जानबूझ के हार जाता है करके ऐसा लगता है. But it's such a situation when you are actually sitting in the commentary booth. What kind of feeling that you usually get? किसी को मारा क्या कभी? अरे यार, I'm a softie. No, but what's important is for a commentator to also, again, these are fine lines. A lot of people from your own country, remember, only your own country is not hearing or watching. Many other countries are. So to be over patriotic or over partisan, I think is a bit of a problem for a commentator, because we're not there as adversaries. You are from England, I'm from India, and we're competing against each other in the commentary box. No, we're both together doing a job as best we can. So to my mind, it's a difficult fine line to walk, but I've always tried to walk the fine line where you're not over enthusiastic about one nation or the other, or overjoyed at one nation winning against the other, because our job is essentially neutrally descriptive. We can't just be taking one side here, So yes, there's extreme disappointment, say, when a catch is dropped at a critical moment. But I'm also personally, in my own mind, I'm a little colored. मुझे क्या है कि थोड़ा सा मुझे अपने आप बोलने से संकोच होता है अगर मुझे निंदा करनी हो. I'm not overcritical at all, because यार, we're all human. अगर हम humans mistake नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही. तो अगर कहीं कैच मिस हो गया तो ये कहना कि क्या कर दिया इसने यार, ये अरे होता है यार. अगर कोई आउट हो गया, गलत टाइम पे आउट हो गया, तो होता है ना भाई. हम सब कोई सुपरमैन थोड़ी ना है कि कोई हम 40,000 रन पे नॉट आउट चल रहे हैं, अरे, या हम हर एक बॉल पे विकेट ले रहे हैं. नहीं होता ना यार. तो उस वक्त पे थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल होना मुझे लगता है कि मुझे शोभा नहीं देता. इसलिए मैं ज्यादा इधर उधर मतलब डोलता नहीं हूँ, हेविली क्रिटिकल या हेविली इन प्रेज. क्योंकि भाई खेल ही तो खेल रहे हैं यार. उनका मकसद ये है कि जितना अच्छा हो सके खेलें, और नहीं हो तो नहीं हो, चलो उस दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं. अब उसकी बहुत गहरी निंदा करने से मुझे अच्छा नहीं लगता यार. सही. Thanks for your time. No, welcome, Shriman. अब कोई इंग्लिश में पूछ रहा है, मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ. कोई हिंदी में, मेरे को समझ में आ रहा है हो क्या रहा है. मेरे दिमाग पे चक्कर खा रहा है जॉर्जी. बट एनीवे, George is source of confusion. Hi, sir. Yeah, go ahead, ask the question. Yeah, hi, sir. This is Rangaswamy from Bangalore, from Karnataka. I think, sorry for the inconvenience. Last time when you asked me my name, for the background noise was very, it's not no problem. Ranga, good to have you speak. Yeah, I have a question about you, the personal thing. So sometimes I think you observe the last time which was played by New Zealand and England, the last time World Cup, which it's happened in the earlier World Cup, Super Over. In that situation, 2019, yes. In that situation, sometimes, one ball was left out around 1 run. So sometimes it will become tie, sometimes it will become super over. So how are you going to be manage those situations? Because everybody is watching the match, even we will feel, sometimes we will also feel become heart attack. So how are you going to be handle those situations? Well, yeah, Ranga, we're all, if I may say so, we're all professionals. ये हम हर रोज करते हैं यार. तो हमें लगता है कि इतना टेंशन नहीं होता जितना कि हमें लगता है कि देखो ये चीज अब ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है, ये मैच जहां आखिरी बॉल पे कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है. तो हमें लगता है कि एज अ प्रोफेशनल कमेंटेटर वी शुड आल्सो राइज टू द ओकेजन and express the same level of excitement that people must be feeling at home.
तो हमें लगता है कि हमको भी कुछ स्पेशल एक अटेंशन देके एक स्पेशल एक्साइटमेंट वहां लानी चाहिए, ताकि हम भी उस सीन को, उस एटमॉस्फेयर को, उस मोमेंट को, उस सर्कमस्टेंस को और बढ़ाएं, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके और एक्साइटमेंट प्रदान करके कि कुछ भी हो सकता है, आखिरी बॉल है और ये और वो. तो we all go with the excitement, not with who's winning, who's losing, but the situation itself, and increase that level of interest and excitement by using even better words, because most professional commentators will know that those are the moments that are going to remain for a long, long time in the minds and the ears of people and the hearts of people. So all of us do our best to take a deep breath and say, okay, now Charu Sharma is the moment where you can really show true ability and keep people interested and let people remember that moment, not only for that moment in the field, but also for the commentary that was attached to it, that accompanied it. तो हमें भी वो एक, मान लीजिए हमारे लिए भी वो एक तरह से एक टेस्ट ही है कि आखिरी बॉल पर क्या आप 4 रन मार सकते हैं जीतने के लिए. वो तो प्लेयर का टेस्ट हो गया. हम भी अपने आप को टेस्ट करते हैं, क्या ये आखिरी बॉल पे आप अपनी कमेंट्री ऐसी बना सकते हैं, कुछ सुना सकते हैं जो लोग याद रखें बहुत देर तक. Right. And George, Murli still has his hand up, but sir has to leave. Murli still has his hand up. He would like to say something, but I think we're running out of time. ठीक है यार, अब बैंकॉक से बात कर रहा है आदमी तो यार फिर. Oh, thank you, very generous, Charu. No, just a quick. I don't know how far. I know. Sorry if I'm mistaken. Nowadays, the commentary takes place from studios. How do you find it? Is it convenient, or no? We don't get the feel of being on the ground and looking around and commentating. Good point. On ground, you feel 9 on 10. In a studio, you feel 1 on 10. Because, I mean, we're also in a studio, all we're doing is watching the television and speaking on it. Now, it's a very important distinction, because in television commentary, we're all, the focus is to speak about what is on the screen. Because everybody watching is watching the game on the screen. So if on the screen, there's a batsman taking his helmet out and there's a lot of sweat coming from this, that, and the other, and we are saying, oh, now in that part of the crowd, there's a disturbance. The people on television are saying, kya bol raha hai? Bhai, kidhar hai ye? Kya baat kar raha hai? Kaun hai? So it's a very important fine line, once again, that you keep your eyes on the screen and make sure that the people who are watching, whatever you're saying is somewhat relevant. Because sometimes we lose direction. The ball, we don't know which direction it is going. Exactly. It's like the whole day Doordarshan camera. If you're well, not just that, but there's a big trend now to be close and close and close. Everything is close up. So if a ball is running towards the boundary, the cameras are closing in so much on the ball, you don't even know how far the fielder running to save it is. And which direction? Is it third man or a long leg? Yeah. So if you're on the ground, very often you break protocol and you look at the ground rather than the screen and say, hey, fine leg could get to this. I think he might win the race. But if you're in a studio, you don't know. Okay, yeah. So it is certainly very, very, a very poor second to being on the ground. But what do you do these days because of protocol, because of, all this COVID business? And also the fact that usually on the ground, as you may know, Murli, only one set of commentators are allowed. And that is what's called the world feed commentator. The rest of the commentators necessarily are in studios doing other language commentary. Yes. I think on that note, I think we will have to say that was the last question. All good things have to come to an end. So thank you very much, all of you, for logging in, signing in, and attending this event. And Charu, thank you very much. This has been George, anytime. I know we haven't been able to do much together, but I think Mr. Sharma mentioned, Siddharth mentioned that we haven't done it because you haven't invited me. Ab mujhe samajh mein aaya. But anyway, let me tell you, the last time we were supposed to do something together, the national sports came in the middle. Arey yaar. You remember? Sorry, yaar. I know, yaar. I apologize. But anyway, it's really wonderful being with all of you. I'm sorry, most of you did not have your camera on, so I don't know. But I mean, thank you so much for joining us. I'll take a few names: Adnan, Darshana, Kamal Kumar, Javed Ahmed, Avinash, Ranga, Rajan, David Durrani, Ashok,
Thank you so much. And of course, Shabnam, what would we do without you? So thank you very much for your assistance as well. Georgie, Well, many thanks, yaar. Well, thanks very much, and have a good evening then. Yeah. Thank you to everybody.